Everyone. Today I'm going to explain you our chapter or occupation in class 3 social science. Then student, today we have seen so many occupation like doctor, cook, nurse, engineer, postman, teacher. So then everyone is stand for different occupation. So firstly we will discuss about the occupation. Then children, the meaning of occupation is the work when the people is doing in the whole life to earn the money for his livelihood. कहने का मीन्स ये है चिल्ड्रन कि ऑक्यूपेशन मीन्स होता है कि पीपल जो वर्क करते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए, बिकॉज बेटा अर्निंग्स डिपेंड ऑन द फुल लाइफ ऑफ द पीपल. अगर एक पर्सन की लाइफ है तो वो बिना अर्निंग के पॉसिबल नहीं है. तो देन स्टूडेंट, today we will discuss about our occupation chapter in social science for class 3 student. Let's discuss it. We need food to eat and clothes to wear and shelter to live. Okay, that means हमें फूड की ज़रूरत है खाने के लिए, क्लोथ्स की ज़रूरत है पहनने के लिए, और शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है भी हमको रहने के लिए. दैट वी कैन गेट ऑल थिंग्स ओनली इफ़ वी हैव द मनी टू बाय. ये हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कब होती है बेटा? जब हमारे पास मनी होती है, और उस मनी को अर्न करने के लिए हम अपना ऑक्यूपेशन चलाते हैं. Fine. What do you mean occupation? Again we will discuss. Any work that helps a person to earn a livelihood is called an occupation. कोई भी वर्क जो हमारी लिवलीहुड की अर्निंग में हेल्प करता है, मनी को गेन करने में हेल्प करता है किसी भी कंडीशन से, दैट इज ऑक्यूपेशन. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर people follow different occupation according to their needs, interest and ability. People different occupation करते हैं according to their needs. जैसे कि किसी का इंटरेस्ट कुकिंग में है, that will be a cook, तो उसका ऑक्यूपेशन बेटा कुक हुआ. Who interest in the look after by the sick people, उसका ऑक्यूपेशन क्या होता है? डॉक्टर. फाइन. तो दैट्स they will according to their interest, needs and ability. Fine. Ability. Next, people work as a teacher, scientist, doctors, engineers, nurses, carpenter, barbers, tailors and farmers. So that means people work in different manner. Fine. Laborers, miners and soldiers. Some people do not work. Why? Because they have their household work at the houses. Now next occupation is farming. Beta, farming is the most important occupation in villages and you can say nearby towns. Farming or agriculture is the main occupation of the people in villages because in this occupation farmers can grow crops, because the population of India 80% depend on the food grains, which included food grains like pulses, grains, oilseeds, sugarcane, jute, cotton, spices, tea, fruits and vegetables. So now that is the main occupation in the Indian people. Different second occupation is rearing animals.
So then today also we can see in the villages rearing animals, because farmers also rear the animals as well as the farming, because different animals are reared for different purposes. Cattle farming consists of rearing cattle like goats and cows and buffaloes and bullock. Okay, next is milk producing, so that we get milk from the cows. Okay, that's why we rear the animals in the cattle farming. So that's we can get milk from cows, buffaloes and goats. And it is compulsory to using the dairy farming or rearing animals for milk and milk product. It is consumed in a great quantity in our India country, and we can also get milk. Meat from cow, bullocks are used to plug field in draw carts. डिफरेंट एनिमल्स जो वर्क करते हैं एज ऑक्यूपेशन, वो डेयरी फार्मिंग के लिए भी कर सकते हैं बेटा, रियरिंग एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, और एनिमल्स को वो मीट के लिए भी पालते हैं. लाइक बुल्क्स इज ऑल्सो यूज फॉर द प्लगिंग फील्ड, जो हमारे क्रॉप्स को फील्ड करता है, प्लग करता है, दैट इज बुल्क्स. नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज पोल्ट्री. Poultry farming is also involves rearing hens, ducks and geese for the meat and eggs. Some people, कुछ लोग बेटा जो होते हैं वो पोल्ट्री वर्क भी करते हैं. इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है? इंक्लूड्स इसमें होता है hen, duck और geese, because these animals and birds lay eggs. In the coastal areas we can see fishing is also important. Fine, fishing is also important because fish is a staple food for many people. We can get oil and other product from the fish. क्या देख सकते हैं हम कि fish, the oil of the fish is very important part of the life. So we can say the oil of the fish is included to sell in the markets all over part of the country. That's why fishing is also important part in India. Now come on, making goods in the factories. Making goods means अब हमारे पास क्लोथ्स हैं तो उनका फाइबर्स हम कहाँ से लाते हैं? जो फाइबर्स है that is come from the cotton plants. So that the making goods in the factory, our next occupation is cotton, jute. फार्मर्स ग्रो कॉटन इन देयर फर्म्स. फर्म्स में जो फार्मर्स हैं वो कॉटन को उगाते हैं. दिस कॉटन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द क्लोथ्स फॉर अस टू वियर. और जो कॉटन है वो क्लोथ्स थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द स्पिनर्स, और स्पिनर्स के बाद वो जो थ्रेड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लॉथ बाय द वीवर्स. दैट्स व्हाई वी कैन से that is done in the factory. Now come on the some different sheets, spices we can say. Similarly, oilseed, sugarcane, jute, tea leaves or coffee beans are grown by the farmer. Okay, and what is the next step? Next step is these all sheets and spices taken to the factories is processed. फिशेस आर समटाइम्स ऑल्सो रियर इन द बिग टैंक्स. अब जो फिशिंग ऑक्यूपेशन है वो किस तरह से फिशिंग फार्मिंग कहलाता है? जितना भी फिशिंग कलेक्ट किया जाता है, आफ्टर कलेक्टिंग दे रियर्ड इन अ बिग टैंक. ओके, दैट इज कॉल्ड द फिश फार्मिंग. नाउ सम स्पेशल ऑक्यूपेशन आर एक्सपोर्ट्स एंड import services. Exports and import services by the sending of goods by the transportation. Goods have to be transported from one place to another. People working in the transport services help to do this. अब बेटा एक one more thing, that products is ready, but
नियर बाय मार्केट प्लेसेस पर वो कैसे पहुंचाया जाता है? बाय द पोस्टल सर्विसेज, ओके, बाय द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दैट टेक्स पीपल हेल्प टू डू आउट इन द मार्केट्स. Next beta, working in forest. Working in forest, that is also a different occupation because large part of our India is covered with thick forest. Okay, because so much due to moderate climate that this soil of India is very fertile. That's why large part of the India is covered by thick forest. मैनी पीपल वर्क इन देयर फॉरेस्ट. बहुत लोग फॉरेस्ट में काम करते हैं. क्यों? बिकॉज सम कट वुड्स विच इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, पैकिंग बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, पेपर एंड कार्डबोर्ड. बिकॉज बेटा जो जितना भी हमारा वुड है, लकड़ी है, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्कआउट करती है. दैट्स वाई वुड इज़ यूज टू बिल्ड देयर होम ऑल्सो. Next beta, occupation is mining. Mining involves digging out minerals. अब बेटा you will tell me कि that what is mining? Mining होता है बेटा जो खान होती है, लाइक सिल्वर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, कोल माइनिंग. ठीक है, तो उसमें जो वर्कआउट होता है लेबर का, वो क्या होता है, जितने भी मिनरल्स अंडरग्राउंड हमें मिलते हैं तो वो हमें डिग करके निकालने पड़ते हैं. ठीक है, तो वो जो पर्सन्स होते हैं दे आर वेरी स्पेशल पर्सन्स, और वही लोग उनको डिग आउट करके मिनरल्स को बाहर निकालते हैं. तब वो मिनरल्स हमारा अदर प्रोडक्ट बनाने में यूटिलाइज किया जाता है. फाइन. तो दैट्स माइनिंग इन्वॉल्व्स डिगिंग आउट मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, मैग्नीज, पेट्रोलियम फ्रॉम द अर्थ सरफेस. In some state of India that are rich in minerals, mining is an important occupation. क्योंकि बेटा जितना भी कोल है, पेट्रोलियम है, जिस पे हमारा पूरा कंट्री डिपेंड करता है, that is also a part of the mining. That's why mining is an important part. Okay, that you can say mining involves digging out minerals. Minerals में कोल तो निकलता ही है, सम काइंड्स ऑफ रॉक भी हम देख सकते हैं, लाइक सिल्वर, स्टील और मेटल. यू कैन से मेटल आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स. बर्तन बनाए जा सकते हैं, टू मेक पाइप्स, मशीनरी सिस्टम, रेलवे इंजन, ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी मोर आइटम्स. Now, what is the work of petroleum? Petroleum give us petrol, diesel, plastics and medicine. और as you know friends, आज के टाइम में प्लास्टिक is the most important part to make the all parts of the country. जितने भी हमें आइटम्स प्रोडक्ट कर बनाने हैं वो सब हमारा पेट्रोलियम और प्लास्टिक्स पे डिपेंडेंट है. Then petrol and diesel are used to run car and buses, means vehicles. Now beta, next occupation is tools and related to travelers. Postal services. Postal services means गुड्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, लाइक पोस्टल, कम्युनिकेशन, मेडिकल, ट्रेवलर्स एंड एंटरटेनमेंट्स, जिनको हमको बाय ऑक्यूपेशन ही साइन करना पड़ता है. बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज. बिकॉज बेटा अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट एंड और communicate with each other, because today is the age of technology and everyone depend on the technology. That's why you have seen how people do different kind of work. All these people are important to us. They provide us with the goods and services we need. आज आपने चैप्टर में देखा कि जिस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर्कआउट करते हैं हमें सर्विसेज और हेल्प देने के लिए इन आवर डेली लाइफ टू फुलफिल आवर नीड्स. तो वी शुड रेस्पेक्ट टू आवर वर्क and their labors. So then friends, we have discussed
About again of the summary of the chapter. We have discussed in this lesson about the occupation means. The occupation means the work that people do on a living is called occupation. Fine. Then first most important occupation is agriculture. Agriculture is most important occupation in India, especially in the villages or small town. इसमें क्या करते हैं लोग? और एग्रीकल्चर में फार्मर्स ग्रो फ्रूट क्रॉप, फार्मर्स जो है फूड क्रॉप उगाते हैं और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को पालते हैं, लाइक पोल्ट्री, कैटल फॉर देयर मिल्क एंड मीट एंड एग्स. और बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट भी मिल्क से बनाए जाते हैं, लाइक चीज़, कर्ड, स्वीट एसेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज बेटा रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल क्या होता है? सम फार्मर्स ग्रो कॉटन, टी, जूट. दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल होता है बेटा वो चीज़ें जिनसे हम एक प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं. लाइक अगर शर्ट बनानी है तो हमको कॉटन चाहिए, तभी तो वो शर्ट एक कंप्लीट होगी. नेक्स्ट बेटा मैन्युफैक्चर गुड्स. मैन्युफैक्चर गुड मीन्स रॉ मटेरियल के बाद फार्मर क्या करते हैं? क्रॉप्स उगाते हैं. क्रॉप्स उगा के वो रॉ मटेरियल रेडी होता है और वो रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज तक जाता है, तब जाकर हमें एक मैन्युफैक्चर गुड्स मिलता है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पीपल इन इंडिया ऑल्सो वर्क इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटल्स. दे प्रोवाइड अस सर्विसेज विद एवरी डे. ओके, कुछ लोग होते हैं बेटा ऑक्यूपेशन में फार्मिंग नहीं करते, उनका वर्क क्या होता है? वर्कआउट इज अदर सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्विसेज. नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा. हाउ फ्लोर रीचेज अस. फ्लोर मीन्स होता है बेटा आटा, जो हमारे वीट का डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं टू मेक द चपाती. किस तरह से हमारे पास आता है? व्हाट इज़ द प्रोसेस? हाउ फ्लोर रीचेज अस. फर्स्ट प्रोसेस इज बेटा फार्मर सो सीड एंड कल्टिवेट द क्रॉप्स. फार्मर जो होते हैं वो सीड लगाते हैं क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए. ओके, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, व्हेन द क्रॉप्स राइपन. जो वो फसल पककर एकदम रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है, देन फार्मर कट्स एंड गैदर इट. तो फार्मर्स क्या करते हैं? उनको काट लेते हैं. ठीक है ना, जब फसल पक के रेडी हो गई है तो उसको काट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट इज बेटा हार्वेस्टेड व्हीट इज सेंट टू फ्लोर मिल्स. अब जो वो हार्वेस्टेड गेहूं है, व्हीट है, कलेक्टेड व्हीट है, वो कहाँ जाएगा? मिल्स पर जाएगा. और जब मिल में जाएगा तो मशीनों में डालेगा और मशीनों के बाद वहाँ पर पाउडर बनेगा. फाइन. वेयर इट इज ग्राइंडेड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स टू मेक द फील्ड. अब नाउ फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट. व्हीट फ्लोर इज पैक्ड एंड देन सेंट टू द मार्केट. जब उसका पाउडर बन गया मिल्स पर तो अब उसका लास्ट स्टेप है वो पैकिंग. फाइन. वहाँ पर फ्लोर पैकेट्स पैक किए जाते हैं और सेंड इट टू द डायरेक्टली मार्केट वेयर वी कैन बाय, क्योंकि मार्केट से हम उस फ्लोर को परचेज करते हैं. नाउ द फाइनल स्टेप इज वी मेक चपाती यूजिंग wheat flour at home. Have you understand what is the process to make chapati where we use in the daily life? Next is same process is take example of fibers. How clothes are made? Kurta are made from cloth, but where does cloth came from? कैसे आता है? Because a team of people work together to produce the manufactured goods. ठीक है बेटा. बेटा अकेला बंदा वर्कआउट नहीं कर सकता, एक टीम वर्क इन्वॉल्व दिस ऑक्यूपेशन. So that's first steps what will be? Farmers grow the cotton plants in the field and the cotton that is plucked from the plants in the raw material. सबसे पहले क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो कॉटन प्लांट्स लगाते हैं. ठीक है, बीज लगाते हैं, सीड प्लांट लगाने के बाद रॉ मटेरियल रेडी होता है. रॉ मटेरियल मीन्स छोटा छोटा कॉटन. प्लग्ड कॉटन इज टेकन द फैक्ट्री. फिर फार्मर्स क्या होते हैं, जब कॉटन रेडी कर देते हैं
प्लांट पर रेडी हो जाता है तो उस कॉटन को ले लेते हैं, तोड़ने के बाद वो फैक्ट्रीज जाता है और उस कॉटन से स्पिनर्स क्या बनाते हैं, थ्रेड. ओके, आफ्टर थ्रेडिंग इज टेकन टू द फैक्ट्रीज व्हेन वीवर्स वीव द थ्रेड इनटू क्लॉथ. और जो वीवर्स होते हैं फैक्ट्रीज में उस थ्रेड से क्या बनाते हैं, क्लॉथ. स्टेप नंबर 4, व्हेन द क्लॉथ इज रेडी टेलर स्टिच क्लॉथ फ्रॉम इट. जब रेडी हो जाता है वीवर से तो टेलर क्या करते हैं, उस क्लॉथ को सिलना स्टार्ट करते हैं. एंड दैट मेक अ शर्ट और कुर्ता. दैट इज द प्रोसेस टू मेक द fiber into the proper cloth where we can buy. Now next is arts and craft of India. So beta, as you see, our India is famous for art and craft. Fine. So artisan use different raw materials and different design to make different beautiful object. different raw materials के लिए different designs use करते हैं. Like famous goods in Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Gujarat, Assam, and South India are famous around the world because embroidery work cloth, juti, silk, bamboo goods, Madhubani paintings, and marble inlay work is the famous work in the state of India. Yes. Now, beta, what you have learned in this chapter? You have learned from this chapter occupation of India. So you have to learn different 3 types of occupation. First, agriculture, industry, and service sector. So then agriculture is related to farmers, animals, or domestication. Now, industry is related to the manufactured goods, and service sector is related to the bank, post office, restaurant, and hospital. I hope you understand about the chapter and you will like my videos. We will present again with the next video of next chapter in social science. Thank you. Take care everyone.